Dealing with the TTP. Muhammad Amir Rana Dawn Editorial. Published December 4, 2022. The banned TTP's formal announcement to call off a ceasefire it had agreed to with the government a few months ago requires an immediate and convincing response from the political and military leadership. Any new decision on dealing with the group should be made in an inclusive way and brought into the public discourse and debated in Parliament. This is not merely a security issue but also a critical factor in our broader politico-strategic and geo-economic priorities. The Federal Interior Minister recently said the government hadn't initiated any sort of formal dialogue with the banned group in the past. However, the security institutions and the civilian government both had started the recent, failed phase of talks with the TTP with much enthusiasm. There was much anticipation that the TTP would become more reconciliatory and some of its cadres would lay down their arms after the Afghan Taliban victory in Afghanistan. However, the Interior Minister has said that such talks are held even in a state of war. What has happened since the Taliban takeover of Afghanistan in Pakistan is known to all, and there is not much left to celebrate as the Afghan situation has already started to hurt Pakistan's security and economy. Most optimistic statements about the TTP talks are still fresh in people's memory. When the TTP announced a formal ceasefire in May, state institutions freed some high-profile TTP leaders, including Muslim Khan, once considered the face of the TTP's lethal SWAT chapter. The formation of jirgas and other delegations and their negotiations with the TTP leadership in Afghanistan is also well known. The decision of talking to the TTP was taken by the military leadership and endorsed by the PTI government. The current coalition government also owned it. However, two factors have dampened the optimism: the Afghan Taliban's continuing political and military support to the TTP so that the group can achieve its objectives inside Pakistan, and the anti-TTP demonstrations by citizens of Swat and other KP districts. For the security institutions, the Taliban's strategy vis-a-vis the TTP was understandable because both groups fought side by side in Afghanistan and have ideological and tribal connections. There was a perception that the relationship between the Afghan and Pakistani Taliban would gradually weaken. The massive protests against the TTP's efforts to regroup in KP, which later expanded into Balochistan, also came as a surprise. The Afghan Taliban have not yet given up their support to the TTP. State institutions have tried hard to dispel the impression that there was any sort of deal involved in allowing the TTP militants to return. They even refuted assumptions that the TTP terrorists were coming back. Still, the anti-TTP protests played a significant role in halting the talks. The state institutions took the demonstrations by citizens more cautiously and as a sign of deepening ethno-nationalism, which they thought was more dangerous for state cohesion. The TTP and other terrorist groups have been continuously launching terrorist attacks against the security forces. From January to mid-November, the group has launched 70 verified attacks against the security forces, which caused 105 fatalities among military, paramilitary, and police personnel as well as civilians. These attacks also caused anger against the militants. The security forces have launched counterattacks and killed dozens of key TTP and Gul Bahadur group commanders in recent months. When the TTP announced the end of the ceasefire, it cited kinetic operations by the security forces, including in Laki Marwat district, as one of the reasons behind their decision. According to reports, the military had besieged and killed TTP militants, who had taken police officials hostage and wanted to move them to Afghanistan. In the same district, the TTP killed 6 police officials in mid-November. The outskirts of Laki Marwat and Banu districts, that lie adjacent to the twin Waziristan districts, appear to have become the new hub of TTP activities. The presence of TTP militants in these two districts strengthened the suspicion of the people of Swat and the tribal districts that the terrorists were on their way back to their towns.
Local leaders from Swat also claim that the TTP had abandoned its positions in Swat because of the arrival of the harsh winter in Malakand division. Most probably, they moved towards the northeast of the province. Apart from its incursions into Pakistan, the TTP is trying to recruit disillusioned youth with religious backgrounds. Reports of the TTP's return have raised alarm across the country, particularly in KP and Balochistan. At the same time, the common man does not want the concentration of security forces to counter the militants in their areas, as it disturbs their businesses and daily life comes apart because of constant fear and a sense of insecurity. Whenever the new security leadership takes a decision on the future course of action, either talks or military action, or both at the same time, it should keep the common people's apprehensions in mind. Though the federal interior minister is restating the official position that only those will be pardoned who lay down their arms, it should be kept in mind that the Afghan Taliban have not yet given up their support to the TTP. They will continue encouraging the militant group covertly, as both have a common ideological mindset and objectives. Usually, security institutions tend to keep the broader picture of regional and strategic scenarios in mind while making decisions regarding domestic threats related to terrorism. They may overlook the Afghan Taliban's position on the Taliban and also consider their limitations in the broader geostrategic and geo-economic contexts. Parliament and an open discussion at various societal levels can help bring clarity and set priorities without compromising on core objectives. Most importantly, state institutions should not see citizens' movements with suspicion, as support is crucial to winning the fight against terrorism and internal threats. Harassing and registering cases against pro-peace demonstrators is counterproductive and leads people to believe that state institutions are compromising their security to please the Taliban. The writer is a security analyst. Published in Dawn, December 4, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. कालादम टीटीपी की जानिब से जंग बंदी खत्म करने के बाज़ाब्ता ऐलान पर उसने चंद माह कबल हुकूमत के साथ इत्तेफाक किया था, जिस पर सियासी और फौजी क़यादत की जानिब से फौरी और काबिल एतमाद रद्द अमल की ज़रूरत है। ग्रुप से निमटने के बारे में कोई भी नया फैसला एक जामे अंदाज में किया जाना चाहिए और अवामी गुफ्तगू में लाया जाना चाहिए और पार्लियामेंट में बहस की जानी चाहिए। यह सिर्फ सलामती का मसला नहीं है, बल्कि हमारी वसीतर सियासी व तस्वीराती और जोग्राफियाई व इक्तिसादी तरजीहात का एक अहम उनसर भी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हाल ही में कहा था कि हुकूमत ने माजी में कालादम तंजीम के साथ किसी किस्म के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया था। ताहम सिक्योरिटी इदारों और सिविलियन हुकूमत दोनों ने TTP के साथ मुज़ाकरात के हालिया और नाकाम मरहले का आगाज़ बड़े जोश व खुरूश के साथ किया था। इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान था कि TTP ज़्यादा मसालेहती हो जाएगी और अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की फतह के बाद इसके कुछ कारकुन हथियार डाल देंगे। ताहम, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इस तरह के मुज़ाकरात जंग की हालत में भी होते हैं। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद से जो कुछ हुआ है वो सब जानते हैं और जश्न मनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अफ़गान सूरत हाल ने पहले ही पाकिस्तान की सलामती और मईशत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। TTP मुज़ाकरात के बारे में ज़्यादातर उम्मीद बयानात अब भी लोगों की याददाश्त में ताज़ा हैं। जब TTP ने मई में बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान किया तो रियासती इदारों ने मुस्लिम खान समेत TTP के कुछ हाई प्रोफाइल रहनुमाओं को रहा कर दिया, जिन्हें कभी TTP के मोहलिक सवाद चैप्टर का चेहरा समझा जाता था। जिरगों और दीगर वफूद की तश्कील और अफ़गानिस्तान में TTP की क़यादत के साथ उनके मुज़ाकरात भी सबको मालूम है। TTP से बातचीत का फ़ैसला फ़ौजी क़यादत ने किया था और PTI हुकूमत ने इसकी तौसीक की थी। मौजूदा मखलूत हुकूमत भी इसकी मलकियत है। ताहम, दो अवामिल ने उम्मीद को कम कर दिया है। अफ़गान तालिबान की तरफ से TTP को मुसलसल सियासी और फ़ौजी हिमायत ताकि ये ग्रुप पाकिस्तान के अंदर अपने मकासद हासिल कर सके, और सवात और KP के दीगर अज़ला के शहरियों की जानिब से TTP मुखालिफ मुज़ाहरे
सिक्योरिटी इदारों के लिए TTP के हवाले से तालिबान की हिकमत अमली काबिल फहम थी, क्योंकि दोनों गिरोह अफगानिस्तान में शाना बशाना लड़े और उनके नजरियाती और कबायली रवाबित हैं। एक तासुर यह था कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होंगे। KP में दोबारा मुनज़्ज़म होने की TTP की कोशिशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज, जो बाद में बलोचिस्तान तक फैल गया, भी हैरत अंगेज था। अफगान तालिबान ने अभी तक TTP की हिमायत तक नहीं की है। रियासती इदारों ने इस तासुर को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है कि TTP के अस्करियत पसंदों को वापस आने की इजाज़त देने में किसी किस्म का मुआहदा शामिल था। यहाँ तक कि उन्होंने उन मफरूज़ों की भी तरदीद की कि TTP के दहशतगर्द वापस आ रहे हैं। इसके बावजूद TTP मुखालिफ मुजाहिरों ने मुज़ाकरात को रोकने में अहम किरदार अदा किया। रियासती इदारों ने शहरियों के मुजाहिरों को ज़्यादा मोहतात अंदाज में और गहरी होती हुई नस्ली कौम परस्ती की अलामत के तौर पर लिया, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि यह रियासती हम आहंगी के लिए ज़्यादा खतरनाक है। TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोह सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्द इना हमले कर रहे हैं। जनवरी से नवंबर के वस्त तक इस ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ 70 मुसद्दका हमले किए हैं, जिन्हें फौज, नीम फौजी दस्तों और पुलिस एहलकारों के साथ साथ आम शहरियों में 105 हलाकतें हुई हैं। इन हमलों से अस्करियत पसंदों के खिलाफ गम गुस्सा भी पैदा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया महीनों में जवाबी हमले किए हैं और TTP और गिल बहादुर ग्रुप के दर्जनों अहम कमांडरों को हलाक किया है। जब TTP ने जंग बंदी के खात्मे का ऐलान किया तो इसने ज़िलाल की मुरव्वत समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की मुतहर्रिक कार्रवाइयों को उनके फैसले की एक वजह करार दिया। इत्तलात के मुताबिक फौज ने TTP के अस्करियत पसंदों का मुहासरा करके उन्हें हलाक कर दिया था, जिन्होंने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया था और उन्हें अफगानिस्तान मुंतकिल करना चाहते थे। इसी जिला में TTP ने नवंबर के वस्त में 6 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया था। लकी मुरव्वत और बन्नू इज़ला के मुजाफात, जो जुड़वां वजीरस्तान के इज़ला से मुत्तसिल हैं, ऐसा लगता है कि TTP की सरगर्मियों का नया मरकज बन चुके हैं। इन दोनों इज़ला में TTP के अस्करियत पसंदों की मौजूदगी ने सवात और कबायली इज़ला के लोगों के शुकूक व शुबहात को तक़वियत बख्शी के दहशतगर्द अपने शहरों की तरफ वापस जा रहे हैं। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी रहनुमाओं का यह भी दावा है कि मालाकन डिवीज़न में सख्त सर्दी की आमद की वजह से TTP ने सवात में अपनी पोजीशनें छोड़ दी हैं। ज़्यादातर मुमकिना तौर पर वो सूबे के शुमाल मशरिक़ की तरफ बढ़ गए। पाकिस्तान में दरअंदाजी के अलावा TTP मजहबी पस मंज़र रखने वाले मायूस नौजवानों को भर्ती करने की कोशिश कर रही है। TTP की वापसी की इत्तलात ने मुल्क भर में ख़ास तौर पर KP और बलोचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। इसके साथ ही आम आदमी नहीं चाहता कि उनके इलाकों में अस्करियत पसंदों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इर्तिकाज़ किया जाए, क्योंकि इससे उनके कारोबार में खलल पड़ता है और मुसलसल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिरहम बरहम हो जाती है। जब भी नई सिक्योरिटी क़यादत मुस्तक़बिल के लाइहा अमल के बारे में कोई फ़ैसला करती है, चाहे वो मुज़ाकरात हों या फ़ौजी कार्रवाई, या दोनों एक ही वक्त में हों, तो इसे आम लोगों के ख़दशात को ज़हन में रखना चाहिए। अगरचे वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला सरकारी मौक़िफ़ का इयादा कर रहे हैं कि हथियार डालने वालों को ही मुआफ़ किया जाएगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान ने अभी तक TTP की हिमायत तक नहीं की है। वो खुफिया तौर पर अस्करियत पसंद ग्रुप की हौसला अफजाई जारी रखेंगे, क्योंकि दोनों की नज़रियाती ज़हनियत और मकासद मुश्तरक हैं। आमतौर पर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ दाखिली ख़तरात के हवाले से फ़ैसले करते वक्त इलाकाई और तस्वीराती मंजरनामे की वसीतर तस्वीर को ज़हन में रखते हैं। वो तालिबान के बारे में अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं और वसीतर जुग़राफ़ियाई और इक़्तिसादी सियाक़ और सबाक़ में अपनी हुदूद पर भी गौर कर सकते हैं। पार्लियामेंट और मुख्तलिफ मुआशरती सतहों पर खुली बहस बुनियादी मकासद पर समझौता किए बगैर वजाहत लाने और तरजीहात का तयन करने में मदद कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि रियासती इदारों को शहरियों की नक़्ल व हरकत को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी और अंदरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए हिमायत ज़रूरी है। अमन के हामी मुजाहिरीन को हरासा करना और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करना उल्टा है और लोगों को ये यकीन दिलाता है कि रियासती इदारे तालिबान को खुश करने के लिए अपनी सलामती पर समझौता कर रहे हैं।
मजमून निगाह सिक्योरिटी तज्जियाकार है। अखज़ शुदा बतारीख 04 दिसंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.